श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read नमस्कार chapter आगे 117 of the Ayodhya Kandam, which is 29 verses. Afraid of prolonging his stay at Chitrakuta because of many handicaps, Sri Rama leaves that mountain and reaching the hermitage of sage Atri, greets the aforesaid Rishi. Glorifying the ascetic life of his wife Ansuya, the sage urges Rama to send his consort Sita to her. Sita greets the venerable old lady on reaching her as instructed by her husband Sri Rama and is kindly received by her. Ansuya gives her instructions on the duties of a devoted wife. आज हम सप्तदशाधिक शततम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 29 श्लोक हैं। श्री राम आदि का अनुमनि के आश्रम जाकर उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनसुया द्वारा सीता का सत्कार। राघवः तु अपयातेषु सर्वेषु अनुविचिन्तयन् न तत्र आरोचयद् वासं कारणैः बहुभिः तदा। उन सब ऋषियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने जब बारंबार विचार किया तब उन्हें बहुत से ऐसे कारण ज्ञात हुए जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहां रहना उचित ना समझा। Reflecting again and again when all the ascetics had left, Sri Rama, for his part, did not like to continue his stay there anymore for many reasons. इह मे भरतो दृष्टो मातरश्च स नागराः सा च मे स्मृतिः अन्वेति तान् नित्यम् अनुशोचयतः। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस आश्रम में भरत से, माताओं से तथा पूर्ववासी मनुष्य से मिल चुका हूँ। वह स्मृति मुझे बारंबार बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब लोगों का चिंतन करके शोक मगन हो जाता हूँ। At this place was Bharata seen by me as well as my mothers with the people of Ayodhya. Nay, that memory still haunts me and I mourn for them daily. स्कन्धावार निवेशेन तेन तस्य महात्मनः हय हस्ति करिशैश्च उपमर्दः कृतो वृषम्। महात्मा भरत की सेना का पड़ाव पड़ने के कारण हाथी और घोड़ों की लीदों से यहाँ की भूमि अधिक अपवित्र कर दी गई है। Moreover, much impurity has been caused to the land by the dry dung of horses and elephants due to the camping referred to above of the army of that high-souled Prince Bharata. तस्मात् अन्यत्र गच्छाम इति संचिन्त्य राघवः प्रातिष्ठत स वैदेह्या लक्ष्मणेन च संगतः। अतः हम लोग भी अन्यत्र चले जाएं ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ वहां से चल दिए। We shall therefore move elsewhere. Pondering thus, the celebrated Sri Rama, a scion of Raghu, accompanied by Sita, a princess of the Videhi kingdom, and Lakshmana, departed from Chitrakuta. सो अत्रेराश्रमम् आसाद्य तं भवन्दे महायशाः तं चापि भगवान् अत्रिः पुत्रवत् प्रत्यपद्यत। वहां से अत्रि के आश्रम पर पहुंचकर महायशस्वी श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान अत्रि भी उन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेह पूर्वक अपनाया। Having reached the hermitage of Sri Atri, that highly illustrious prince saluted him, and the glorious Atri too received him as his own son. स्वयं आतिथ्यम् आदिश्य सर्वम् अस्य सुसत्कृतं सौमित्रिं च महाभागं सीतां च समासान्त्वयत्। उन्होंने स्वयं ही श्री राम का संपूर्ण आतिथ्य सत्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीता को भी सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। Having personally shown every hospitality with full honors to him, he comforted the highly blessed Lakshmana and Sita too. पत्नीं च ताम् अनुप्राप्तां
वृद्धाम् आमन्त्रय सत्कृतां सान्त्वयामास धर्मज्ञः सर्वभूतहिते रतः। अनसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीं प्रतिगृह्णीष्व वैदेहीम् अब्रवीत् ऋषिसत्तमः। संपूर्ण प्राणियों के हित से तत्पर रहने वाले धर्मज्ञ मुनि श्रेष्ठ अत्रि ने अपने समीप आई हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी एवं धर्मपरायण बूढ़ी पत्नी महाभागा अनसुया को संबोधित करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा संतुष्ट किया और कहा, देवी विदेह राज नंदिनी सीता को सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। Calling by name his aged and highly blessed wife Anasuya, who had reached his presence and was received with attentions by him, and who was given to austerities and the practice of virtue, Atri, the foremost of sages who knew what is right and was devoted to the good of all created beings, spoke kindly to her and said, "Welcome, Sita, a princess of the Videhi kingdom." Ramaya cha achakchaye ताम तापसीं धर्मचारिणीं दश वर्षाणि अनावृष्ट्या दग्धे लोके निरन्तरं यया मूलफले सृष्टे जाह्नवी च प्रवर्तिता उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्च अल्पलङ्कृता। 10 वर्षसहस्राणि यया तप्तं महत्तपः अनसूया व्रतैः तात प्रत्यूहाश्च निबर्हिताः। तत्पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी को धर्मपरायण तपस्विनी अनसुया का परिचय देते हुए कहा, एक समय 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय जब सारा जगत निरंतर दग्ध होने लगा, तब जिन्होंने उग्र तपस्या से युक्त तथा कठोर नियमों से अलंकृत होकर अपने तप के प्रभाव से यहाँ फल मूल उत्पन्न किए और मंदाकिनी की पवित्र धारा बहाई, तथा तात जिन्होंने 10,000 वर्ष तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रत के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों को निवारण किया था, वही ये अनसुया देवी है। He further introduced to Sri Rama as follows the aforesaid lady who was given to austerities and the practice of virtue. Like a mother to you, O sinless prince, is this celebrated Anasuya, distinguished by severe asceticism and adorned with sacred vows, by whom roots and fruits were produced, and the river Ganga, a foster daughter of the royal king Jahannu, was made to flow close to my hermitage by virtue of her asceticism at a time when the world had been dried up by a drought continuing for 10 years without a break. Nay, by whom great ascesis was practiced for 10,000 years, and obstacles in the way of rishis were done away with, and by whom, for the purpose of gods in a great hurry, 10 nights were reduced to 1 night. देवकार्य निमित्तं च यया संत्वरमानया दशरात्रं कृता रात्रिः सेयं मातेव ते अनघ। निष्पाप श्री राम इन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी, वह ही ये अनसुया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय है। तामिमां सर्वभूतानां नमस्कार्यां तपस्विनीं चतुर्देही वृद्धां अक्रोधानां सदा। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी है, क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सकता। विदेह नंदिनी सीता इन वृद्ध अनसुया देवी के पास जाए। Let Sita, princess of the Videhi kingdom, meekly approach this celebrated and aged hermitess, who is worth saluting in the eyes of all created beings and is ever free from anger. एवं ब्रुवाणं तं ऋषिं ततेत्युक्त्वा स राघवः सीताम् आलोक्य धर्मज्ञामिदं वचनम् अब्रवीत्। ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनि से बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धर्माज्ञ सीता की ओर देखकर ये बात कही। Saying amen,
to the aforesaid Rishi who was speaking in this strain and looking at Sita who knew what is right, the celebrated Sri Rama addressed the following words to her. Rajaputri Shrutam Tetan Munehe Asya Samiritam Shreyo Atmanaha Shigram Abhigaccha Tapasvinim. राजकुमारी महर्षि अत्रि के वचन तो तुमने सुन ही लिए, अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी देवी के पास जाओ। The foregoing utterances of the sage has surely been heard by you, O princess. For your own good, therefore, quickly approach the hermitress with reverence. Anasuyeti ya loke karmabihi kyatim agata tam shigram abhigaccha त्वम अभिगम्याम तपस्विनी। जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनसुया के नाम से विख्यात हुई है, वह तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य है, तुम शीघ्र ही उनके पास जाओ। Speedily seek you respectfully the ascetic lady who is worth approaching with reverence and who has attained celebrity in the world through her actions under the name of Anasuya, which literally means free from jealousy. Sita Tvetad Vachaha Shrutva Raghavasya Yashaswini Tam Atripatnim Dharmajñam Abhichakrama Maithili. श्री रामचंद्र जी की ये बात सुनकर यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता धर्म को जानने वाली अत्रि पत्नी अनसुया के पास गई। Hearing this extortion of Sri Rama, the illustrious Sita, princess of Mithila, for her part, proceeded to meet the celebrated and aged consort of Atri. Sasatam Vepamanangim Prabhate Kadalimiva Tam tu Sita Mahabhagam Anasuyam Pativratam Abhyavadayad Avyagra Swam Nama Samudaharat. अनसुया वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई थी, उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी तथा सिर के बाल सफेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर कांप रहे थे। सीता ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभाग पवित्रवता अनसुया को प्रणाम किया। The hermitess, who was feeble of body and wrinkled, with her hair turned grey due to old age, and whose frame constantly shook like a banana leaf in a storm. Sita, for her part, calmly greeted the highly blessed Ansuya, devoted to her husband, and duly uttered her own name by way of introduction. Shitilam Balitam Vriddham Jara Pandura Murdajam Satatam Vepamanangim Prabhate Kadalimiva Tam tu Sita Mahabhagam Anasuyam Pativratam Abhyavadayad Avyagra Swam Nama Samudaharat Abhivadya cha Vaidehi Tapasim Tam Damanvitam Baddhanjali Putha Krishta Paryupruchad Anamayam. अनसुया वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई थी, उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी तथा सिर के बाल सफेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर कांप रहे थे। सीता ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभाग पतिव्रता अनसुया को प्रणाम किया। उन संयमशीला तपस्विनी को प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। The hermitess, who was feeble of body and wrinkled with her hair turned grey due to old age, and whose frame constantly shook like a banana leaf in a storm. Sita, for her part, calmly greeted the highly blessed Anasuya, devoted to her husband, and duly uttered her own name by way of introduction. Nay, having greeted that hermitess, who was endued with self-restraint, Sita, princess of the Videhi kingdom, full of joy, inquired after her health with folded hands. Tataha Sitam Mahabhagam Drishtva Tam Dharmacharinim Santvayanti Abravit Vriddha Drishtya Dharmam Avekshase. धर्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता को देखकर बूढ़ी अनसुया देवी उन्हें सांत्वना देती हुई बोली, सीते, सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो।
Seeing the highly blessed and celebrated Sita, who was given to practice of virtue, the old lady thereupon comfortingly said to her, "Luckily enough, you have your eyes fixed on righteousness." त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते मानवृद्धिं च मानिनी अवरुद्धं वने रामं दृष्ट्या त्वम् अनुगच्छसि। माननी सीते बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाले मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। Having forsaken your relations and given up your exaltation, O proud Sita, I am glad you are following your husband Sri Rama, who has been exiled into the forest. नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हों या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। Worlds that are attended with great prosperity await those women to whom their husbands is dear, no matter whether he lives in a city or in a forest, whether he is propitious or adverse. दुःशीलः कामकृतो वा धनैर्वा परिवर्जितः स्त्रीणाम् आर्यस्वभावानां परमं दैवतं पतिः। पति बुरे स्वभाव के मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों ना हो, वे उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। In the eyes of women who are blessed with a noble disposition, the husband is the highest deity, no matter whether he is ill-mannered or licentious or entirely devoid of riches. नातो विशिष्टं पश्यामि बान्धवं विमृशन्ति अहं सर्वत्र योग्यं वैदेही तपः कृतम् इव अव्ययम्। विदेही राजनंदिनी में बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वे इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। Though deeply pondering, I do not see for a woman a friend greater than the husband and more capable of yielding one's desired object at all places, like the imperishable fruit of one's austerities, O princess of Vaidehi kingdom. न तु एवम् अनुगच्छन्ति गुणदोषम् असत्स्त्रियः कामवक्तव्य हृदया भर्तृनाथाश्चरन्ति याः। जो अपने पति पर भी शासन करती है, वह काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती, उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता, अतः वह इच्छा अनुसार इधर उधर विचरती रहती हैं। Those evil women, however, whose hearts are swayed by desire, nay, who lord it over their husbands, having no sense of virtue and vice, and move about at will, do not follow him in the aforesaid manner. प्राप्नुवन्ति अयशश्चैव धर्मभ्रशं च मैथिली अकार्यवशाम् आपन्नाः स्त्रियो याः खलु तद्विदाः। मिथिलेश कुमारी, ऐसी नारियां वशी ही अनुचित कर्म से फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। Indeed, fallen a prey to concupiscence, which is worth giving up, women who belong to that category, O Princess of Mithila, meet with a fall from virtue and also reap infamy. त्वद्विदास्तु गुणैर्युक्ता दृष्टलोकपरावराः स्त्रियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा। किंतु जो तुम्हारे समान लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं, अतः वह दूसरे पुण्य आत्माओं की भांति स्वर्ग लोक में विचरण करेंगी। Women like you, on the other hand, who are adorned with virtues like devotion to their husband and have discovered what is good and evil in the world, will hereafter dwell in heaven in the same way as those who have performed meritorious deeds. तदेव मेतं त्वम् अनुव्रता सती
पतिप्रधाना समयानुवर्तिनी भव त्वभर्तुः सहधर्मचारिणी यशश्च धर्मं च ततः समाप्स्यसि। अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पति देव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो, सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें सुयश और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। Therefore, remaining devoted to the service of this prince, nay, looking upon your husband as the foremost object of your worship, and attending on him at the proper time, practice virtue in cooperation with your husband. Thereby, you will easily attain fame as well as religious merit. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तदशाधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 117वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 117 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।